I still remember when I was into my college, second year. The only aim was mine ki I wanted to bear my college expenses at that moment. Now, no more dependency on parents. I have to bear my college fees, daily basis expenses, need to do everything. So Yeah. मुझे समझ नहीं आया था कि मैं क्या करूँ. Like I was having just two options. One is okay, start crying and tell everyone about the situation and get the sympathy, or else मैं इस प्रॉब्लम में अपनी वजह से हूँ, so I only have to find the solution. अब एक और बार रिस्क ले लेते हैं. So I have started affiliate marketing. From there I have made around more than 3 lakh rupees out of it. वो फ्रीडम ही थी जिसने मुझे सबसे ज्यादा पुश किया है अब मेरी जर्नी में. Hello, everyone. So, welcome to this amazing podcast with an amazing personality, one and only Saba Khan. So, hi, Saba. Thank you so much for coming. She's a seven-figure coach and a very hardworking person. I'm also super inspired from her. So, hi, Saba. Just tell more about yourself, like what you do and how you do Hi. that. Yeah. First of all, thank you so much, Rohan, for inviting me. I'm really, really excited for today's podcast. So I just wanted to give you a little bit intro of myself, because after that, you guys will get to know about my whole journey. So right now, I'm an agency owner, like seven-figure agency owner. I'm working with the coaches, Indian international coaches. We are into this industry from past 2.5 years now. So yeah, Wow. the journey was like super duper excited. But yes, let's hold it till the end. Yes, that's great. Okay, so let's not talk about achievements now. Let's talk about that struggle, how you started and why you started, right? And what was the struggle when you started, when you were sitting on zero, right? So just want to know your story. So, first of all, I have never thought of starting an agency. I don't know, like with the flow, the destiny, uh, मैं यहाँ पे आ गई. I'm not having any idea how everything has started. And I still remember when I was into my college, second year. The only aim was mine ki I wanted to bear my college expenses at that moment. So I was like, let's start something doing. Okay. Now, no more dependency on parents. I have to bear my college fees, daily basis expenses, need to do everything. So I've just started browsing over the internet. कोई मैं ऐसा work search कर सकूं so that I can do it by sitting at my home. At that moment, I have came to an opportunity like network marketing. Again, I'm not against the industry, but yeah, I came to this opportunity that was network marketing, जो मेरे लिए work नहीं किया, and because of that thing, I got under a loan of 75K. एक कॉलेज स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर में है, ओके, जो टोटली पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, दैट पर्सन गॉट अंडर अ लोन ऑफ 75K. नाउ यू वुड बी Oh, थिंकिंग, ओके यार, वो 75K आए कहाँ से, राइट? yeah. सो व्हाट हैपेंड कि मेरे पेरेंट्स ने जो मुझे कॉलेज फीस दी थी, आई हैव इन्वेस्टेड द होल अमाउंट ओवर देयर इटसेल्फ On विदाउट network नोइंग देम. marketing? या, ऑन नेटवर्क मार्केटिंग. Okay. Then एंड what happened? Yeah. अब तो वो चीज मेरे वर्क नहीं करी. आई गेट अंडर अ लोन. आई वाज लाइक, व्हाट शुड आई डू? शुड आई टेल टू माय पेरेंट्स? अगर मैंने पेरेंट्स को बोल दिया, दे वुड बी लाइक, स्टॉप गोइंग टू कॉलेज नाउ. नाउ दिस इज द राइट टाइम टू गेट मैरिड, और एल्स Yeah. सिट एट योर होम. सो Yeah. मुझे समझ नहीं आया था कि मैं क्या करूं. लाइक आई वाज हैविंग जस्ट टू ऑप्शंस. वन इज ओके, स्टार्ट क्राइंग and tell everyone about the situation and get the sympathy, or else मैं इस problem में अपनी वजह से हूँ, so I only have to find the solution. And of course I have focused on the second thing. मैंने solution पे focus किया. मैंने Yeah. सोचा चलो let's start doing something, मुझे money pay करनी है. then मैंने search किया, उसी टाइम पे COVID आ गया. मैंने कहा ओ शिट, मैं कोई बाहर जाके भी काम नहीं कर सकती. So again I have started browsing. Okay, let's search some work from home kind of thing. And I got to an opportunity like affiliate marketing at that time. Okay. So मैंने कहा ठीक है यार, ऑलरेडी पहले रिस्क ले रखा है, अब एक और बार रिस्क ले लेते हैं. So I have started affiliate marketing. From there I have made around more than 3 lakh rupees out of it. I have paid my like जो भी मेरा डेट था मैंने उसको पे किया. Then I have started my agency. So yeah, like my aim was just to bear my college expenses, but उस flow में मैं agency पे कब आ गई मुझे खुद भी idea नहीं है. But yes, so what I just learned from this thing कि you just have to get out of your home, out of your comfort zone, Yeah. then automatically आपकी destiny वहां पे पहुंचा देगी जिसके लिए आप right fit हो. Yeah.
Yeah, I think how you got that courage, that's what I want to know. Like in terms of money, like I belongs to a very good family in terms of finance, but I don't know, like I always wanted to be an independent woman. In terms of freedom, I was not having that much, right? Yeah, Financially parents का पूरा support था, but I have to ask each and everything from them. And yeah. मुझे वो freedom चाहिए था, sort of freedom कि no, I want to take my decisions by my own. Plus मेरी decisions right हो या wrong हो, that's okay. Like I want But myself to that be should be your responsible. decision, right? Exactly. Yeah, तो yeah. वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा था, और वो फ्रीडम ही थी जिसने मुझे सबसे ज्यादा पुश किया है अब मेरी जर्नी में, कि ये सब यू यू हैव टू रीच एट दैट लेवल. मुझे अपनी फैमिली में जैसे सारी लड़कियों के साथ होता है कि पढ़ाई कर ली, देन दे गॉट मैरिड अकॉर्डिंग टू देयर पेरेंट्स. आई डोंट वांट टू हैव दैट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, या मुझे वो अपनी लाइफ में चाहिए ही नहीं था. आई वांट ईच Something एंड big, एवरीथिंग. something. हाँ, Yeah, कि सब कुछ मैं चूज करूं. मुझे जो भी करना है, हर चीज अपनी लाइफ में, हर चॉइस मैं पिकअप करूं, कि आई yeah. वांट दिस थिंग, दिस पर्सन, or this dream, everything would be done by me only, not my Yeah. parents or anyone else. Yes, yes, yes. Yeah, this is the most important thing, and many people don't do that. Uh, what do you think? Why many people don't? You know, they have how to convince parents. People are not working for their dreams, and they blame their families, right? What do you think about this? And they always say, my parents don't understand. I'm doing because of my parents. How to convince them? So, what do you think about that? See, I'll be blunt about this thing. Might be some people won't be liking this thing, but it's just an excuse they are giving to themselves. I, I just want to ask this question with you guys कि अगर कभी भी किसी ने फर्स्ट टाइम स्मोक किया है, उसने अपने पेरेंट्स से पूछा था? ऑफ कोर्स नॉट. कभी भी आपने अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अगर आप कोई भी रिलेशनशिप में रहे हो, हैव यू आस्क्ड विद योर पेरेंट्स? ऑफ कोर्स नॉट. व्हेन इट कम्स टू अबाउट एंजॉयिंग योर लाइफ, और जो आपको अपनी एडिक्शन हो वो चीजें कंप्लीट करनी होती है, एट दैट मोमेंट वी डोंट थिंक अबाउट दिस थिंग. वी शुड आस्क आवर पेरेंट्स और नॉट. बट व्हेन इट लिटरली कम्स अबाउट योर करियर, मेकिंग मनी, और जो अपने लाइफ के बिग डिसीजंस लेने होते हैं, एट दैट टाइम वी मेक द एक्सक्यूजेस कि नो, माय पेरेंट्स आर स्टॉपिंग और डूइंग दैट. पेरेंट्स का सिंपल सा फंडा है कि दे जस्ट वांट अस टू बी सक्सेसफुल, दे जस्ट वांट अस टू बी हैप्पी, राइट? एंड कहीं ना कहीं इंडिया में पेरेंट्स को लगता है कि यार वो अपने बच्चे को सिक्योर ही रखना चाहते हैं, चाहे वो 28 का हो जाए, 35 का हो जाए, या 40 का हो जाए, राइट? बट या मतलब उनकी अपब्रिंगिंग ही वैसी है, सो दे आर नॉट रॉन्ग एट देयर प्लेस. दे जस्ट वांट अस टू बी एट अ गुड प्लेस विद अ गुड पीपल right around us, so they are doing it right at their place. But it's our responsibility to make them understand about the situation, about each and everything. But yes, before making them understand about it, just prove them first by your actions, then वो automatically मान जाएंगे. They would be like happy enough. So people are just making excuses right now, that's it. Yes, I do agree with this thing, getting some money in the bank account to win the trust of your parents, and that's how we can convince the parents, right? I think this is the easiest thing because they will not understand what exactly you are doing, and it's completely okay, right? Correct. Yeah. Okay, Saba, now I want to know about, you did that network marketing, right? And that loan things, right? And after that, you get into this agency thing. Now I want to know about that agency struggle. I know, getting your first client and then delivering that client, getting your second client. So what was the struggle? Okay, so when I've just started my agency, of course, with my business partner Vishesh, we were not clear enough about this thing. Ki, okay, क्या agency start करनी है? We have just came with the idea, okay, let's start a business. Because कहीं ना कहीं हम दोनों का वो vibe और वो connection match हो रहा था, and we were like, okay, let's do something like that. And at that time, okay, मैं सबसे ज्यादा follow करती थी, हम content consume करते थे ईमान गादसी का. I was like, okay, let's get started with Facebook. Okay, मैंने फेसबुक का बैठ के पूरा सीखा, हाउ टू रन एड्स, ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच. मैंने पूरा रोड मैप बनाया विशेष के साथ बैठ के. बट व्हेन वी हैव जस्ट हमने फिर कॉल्स बुकिंग का करना स्टार्ट किया, एंड आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे कोई आइडिया नहीं था. मैं पूरा एक स्क्रिप्ट लेके बैठी थी कि मुझे कैसे बात करनी है.
एंड आई वाज जस्ट फॉलोइंग दैट स्क्रिप्ट, ओके मुझे ये बात करनी है, मैं कॉल पे बात कर रही थी। और उसी टाइम मैंने एक बहुत ही हाई क्लाइंट को रीच किया था, मतलब रीच आउट किया Okay. था, एंड मुझे First वहां time, से, right? या मुझे वहां से Yeah. रिस्पॉन्स मिला, एंड आई वाज So लिटिल शॉक्ड कि how you उन्होंने reach out? लाइक थ्रू इंस्टाग्राम ओनली, मैंने उनको Okay. मैसेज किया एंड आई हैव ड्रॉप्ड हर अ मेल आल्सो, वहां से मुझे रिकॉर्ड बैक मिला। देन मैं उनसे कनेक्ट हुई ओवर अ कॉल, बट द सेम थिंग, मैंने सिर्फ स्टार्ट किया था, मुझे कोई आइडिया नहीं था, आई वाज जस्ट फॉलोइंग द स्क्रिप्ट। वो क्लाइंट क्लोज नहीं हुई, बट आई वाज हैप्पी इनफ कि मुझे एटलीस्ट कॉल पे आने का लाइक वो चांस मिला उनके साथ। Yeah, that I was was like, also the okay, win. हाँ, Yeah. exactly. I was like, oh, this is working. Sabah, you just have to follow this thing. Then the second thing happened कि हम लोग ना वर्कशॉप्स अटेंड करते थे, राइट? आई Yeah. वाज ऑलवेज हैविंग दिस थिंग कि मुझे अपने आप को अपग्रेड करना है इन टर्म्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग। तो एक बार हम एक टाइम मैनेजमेंट कोच का वर्कशॉप अटेंड किया, एंड आई थॉट ओके लेट्स पिच हिम ओनली अबाउट आवर सर्विस। हमने उनको अपने फेसबुक एड्स के लिए पिच किया। आफ्टर द वर्कशॉप जैसे एंड हुआ, हमने मैसेज किया। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास ऑलरेडी एजेंसी है फेसबुक की, बट वी वांट समवन हु कैन मैनेज आवर इंस्टाग्राम एंड डू एवरीथिंग। आई वाज लाइक ओके, क्योंकि मैं एफिलिएट मार्केटिंग में थी, मुझे इंस्टाग्राम के बारे में मोस्ट ऑफ द चीजें पता था, आई वाज डूइंग इट फॉर माई सेल्फ। मैंने कहा या आई कैन डू दैट थिंग। सो मैंने वो स्टार्ट किया उनके लिए मैनेजमेंट करना। सो वो क्लाइंट ऑटोमेटिकली उन्होंने खुद ही बोला था उन्हें क्या चाहिए, and मैंने उसी सर्विस पे वर्क करना स्टार्ट किया। सो दिस इज हाउ आई Awesome. गॉट शिफ्टेड फ्रॉम फेसबुक एड्स टू दिस ऑर्गेनिक वाला पार्ट में मैं शिफ्ट ऑन हो गई इनटू द Yeah, इंस्टाग्राम मैनेजमेंट। interesting. How much you charge? ओके, एट दैट टाइम मेरा जो चार्ज था दैट वाज ऑफ अराउंड, मैंने उनसे 15,000 रुपीज चार्ज किया था। एंड आई टेल यू उस 15,000 में I was making just 5,000, जिसमें विशेष और मैं स्प्लिट कर रहे थे वो 5,000 को भी, बट 10,000 हम एक आउटसाइड आउटसोर्स करके एक ग्राफिक डिजाइनर को दे रहे थे उनके लिए ग्राफिक्स बनवाने के लिए। Okay. सो इसमें मेरा जो मेन फोकस था, मैंने कहा सबा पैसा नहीं बचेगा मुझे पता है, बट मुझे उनकी, अभी मैंने अपना ब्रांड स्टार्ट किया, मुझे इस क्वालिटी का वर्क प्रोवाइड करना है कि मैं मार्केट में सस्टेन कर सकूं, प्लस मेरा वो नेम बन सके। सो Yeah. आई वाज हैविंग जस्ट वन थिंग, चाहे मेरे को कोई प्रॉफिट ना बचे, बट आई हैव टू गिव द बेस्ट वर्क टू माय क्लाइंट। Yeah, सो this is the हमने, important. हाँ, हमने 10,000 का मतलब आउटसोर्स किया है, वी वर जस्ट मेकिंग 5,000 रुपीज, एंड उसमें भी हम दोनों स्प्लिट कर रहे हैं लाइक 2,500 रुपीज पर पर्सन, बट वी वर लाइक हैप्पी इनफ, वी नो व्हाट वी आर डूइंग, और वो चीज वर्क करेगी। देन वहीं से जब हम लोग क्लाइंट के साथ काम किया, दैट वाज लाइक बिग क्लाइंट फॉर अस, क्योंकि उनका एक खुद का एक कंपनी था कोचेस का मुंबई में, ही इज वन ऑफ द फेमस कंपनी, तो हमने उनका पूरा वो कंपनी का हैंडल किया। देन हमें फिर और क्लाइंट्स मिलने स्टार्ट हो गए इंस्टाग्राम मैनेजमेंट के। Like we have started increasing our price 20,000, 25,000. Now we are charging, of course, अब तो बिल्कुल different scenario है, but yeah, the major thing जो हुआ था जब मैंने agency start किया, that was like every client is different, ठीक है, उनकी बहुत ही different personality है, और Yeah. कोई client बहुत ही soft रहे हैं, कोई बहुत ही hard रहे हैं, तो वो जो Yeah. जर्नी थी ना वो बड़ी मेरे लिए Okay. मतलब बहुत ही वियर्ड जर्नी थी। Yeah. जब मैंने स्टार्ट किया, मेरे फर्स्ट क्लाइंट तो बहुत ज्यादा अच्छे थे, लाइक बहुत हैप्पी एंड एवरीथिंग, तो आई वाज लाइक आई वांट टू वर्क विद दिस थिंग। देन आई गॉट वन क्लाइंट, शी वाज सो स्ट्रिक्ट इनफ, लाइक आई स्टिल रिमेम्बर, मैं रोने भी लग गई थी उनके साथ काम करते हुए, एंड आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू डू दिस वर्क, Yeah. आई I डोंट वांट experienced the टू। same, Yeah, this happens. These kind of clients, yeah. बट आई थिंक वो क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपकी इनिशियल स्टेज पे आते हैं, वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इनफ बनाते हैं। लाइक मोस्ट ऑफ Yeah. द जो मेरी एजेंसी में जो प्रोसेस मैंने इम्प्लीमेंट किया है ना, वो कहीं ना कहीं मेरे क्लाइंट ने मुझसे बोला कि दिस इज समथिंग दैट इज मिसिंग, मैंने उस Yeah. चीज का फिर सिस्टम बनाया। सो मेरी जो एजेंसी में इम्प्रूवमेंट आती रही है, वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो क्लाइंट का है। सेकेंड थिंग, आई वॉज ऑलवेज अ पर्सन जो बहुत ही इन्वेस्टिंग माइंडसेट वाली है, Yeah. राइट? आई हैव इन्वेस्टेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन माई सेल्फ इन इम्प्रूविंग माई सेल्फ। मुझे जो भी लगता है ना कि दिस इज समथिंग आई एम मिसिंग, ये है मेरे अंदर जो मेरे अंदर अभी नहीं है, आई एम अवेयरिंग Yeah. अबाउट दिस थिंग, आई एम हैविंग द अवेयरनेस, आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, चाहे मुझे उसके लिए कितना भी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना हो। राइट नाउ लाइक वी हैव इन्वेस्टेड अराउंड $3,000 ऑन आवर सिस्टम्स एंड एवरीथिंग। हमने एक कोचिंग ली ताकि Okay. हम उसको कैसे सेटअप कर सकते हैं। Till तो now, three K dollar till now, नो, or लाइक $3,000 तो अभी मैंने रिसेंट में एक कोच पे इन्वेस्ट करे, बट बिफोर दैट okay. ऑल्सो आई हैव इन्वेस्टेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन माई सेल्फ in Uh, terms of everything, okay. communication, how to talk about
इंस्टाग्राम का गेम अप लेवल करने का, क्लाइंट्स को रिजल्ट प्रोवाइड करने का, एवरीथिंग. What's the roughly amount if you can tell? Roughly amount to like I invested around like 5 lakhs rupees, 4 to 5 lakh rupees on Yeah, myself. so this is important, guys, self Yeah. investment. Same in my case, I think, Right. yeah, If you are not going to invest on yourself, so कोई और आप पे क्यों invest करेगा? Of course yeah, not. First of all, make yourself this much capable enough ना. उस yeah, 15,000 को जब मैं चार्ज करती थी, और if now I am charging like $1,500, तो उसके बीच का जो डिफरेंस है वो इसी से हुआ है. ठीक है. yeah, तो जब मैंने बहुत बार देखा है, मेरे पास डीएम्स आते हैं, मैम यू आर रनिंग एन एजेंसी, कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट प्राइस शुड आई चार्ज? हाउ कैन आई टेल यू what price you should yeah, charge? Like it's yeah, totally dependent upon yourself. Like आप कैसे person हो, आप उन्हें क्या yeah, result दे सकते हो, उस पर depend करता है ना. If I am charging $1,000, I can't say to you कि charge $1,000, yeah. That right? kind of portfolio you should have. Exactly, portfolio and everything. Like how much you have invested on yourself, that will identify about this thing. Okay. Okay, guys, one more thing, I think you were charging 15K, right? 15K, it's around, I think, $200, right? Correct. So, journey from $200 to $1,500. And I think this is the most interesting thing. So we will be discussing this thing in our second podcast, and that will be some advanced thing. And yeah, so yeah, continue, Sabah. So this is what I just wanted to tell you कि शुरुआत में जब आप क्लाइंट के साथ काम करोगे, ब्रेकडाउन्स आएंगे, बट यू हैव टू वर्क अपॉन योर सेल्फ कि आप उनको रिजल्ट कैसे प्रोवाइड कर सकते हो. सेकेंड थिंग, शुरुआत में प्लीज पैसे पे कम फोकस करो इन टर्म्स ऑफ मनी, फोकस ऑन द क्वालिटी. Should we राइट. work for आजकल free लोग, to get testimonials and portfolio if आई डोंट someone is बिलीव, starting? सी सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, ठीक है, एंड बट आई डोंट बिलीव इन वर्किंग फॉर फ्री. राइट. क्योंकि इससे क्या होता है, जो क्लाइंट होता है ना, जब आप उसके लिए फ्री में काम कर रहे होते हो ना, वो आपको उतना सीरियसली नहीं लेगा. ठीक है. Mm, एंड अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हो, आपका भी मेन एम है कि आप उसको रिजल्ट प्रोवाइड कर सको. बट एज अ सोशल मीडिया मैनेजर, एज और एज एन एजेंसी ओनर, ऐसा नहीं है कि मैंने अपना 100% दिया बट क्लाइंट ने अपना 20% भी नहीं दिया, मैं उसको रिजल्ट दे दूंगी. नो, दैट पर्सन शुड ऑल्सो इन्वॉल्व 100% टू हिज बिजनेस. जब हम दोनों इन्वॉल्व होंगे तब उसे रिजल्ट मिलेगा. तो जब आप किसी के लिए फ्री में काम करते हो ना, आप अपनी साइड से 100% इन्वॉल्व होते हो, बट वो पर्सन आपको लाइटली ले रहा होता है. ओके, आपको उससे कुछ स्टफ चाहिए, ही और शी yeah, विल से ओके आई विल प्रोवाइड, आई विल डू दिस थिंग. वो 100% इन्वॉल्व होगा ही नहीं. तो आपको अगर टेस्टिमोनियल के लिए भी वर्क करना है, तो आपको वहां से वो टेस्टिमोनियल मिल नहीं पाएगा. तो चार्ज स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, कम चार्ज कर सकते हो, बहुत mm. माइनर अमाउंट, बट चार्ज समथिंग सो There, दैट वो there, आपके there ऊपर will वर्क. be some seriousness, right? एग्जैक्टली. Yeah, I want to share my experience in that. I think this thing works for like sometimes working for free, that works. Sometimes this doesn't work for some people. You know, I got I got some feedbacks and testimonial working for free, but it was only 2 days. Like I completed the work in just 2 days. Maybe the copywriting and designing and get some feedback or testimonial, something like that. Okay. So This this is a happened. smart thing, selling the service instead of the results. You can Yeah. do that in just like if I talk, I'm into funnel building and copywriting. You can just do that in just 3 days. Just just improve the copywriting, just improve the designing of some person of some people. So this is something that you can try, but try for big people. Yeah. This is something you can do, and yeah, like different people, so things work differently for everyone. Yeah, Yes, and it would depend upon the industry also. Like for a landing page, of course, you can do, but when it comes to Facebook ads, right? yeah, Or when no, it comes to social media management, it's not possible. Within a week, you can't provide them the result, yeah, right? And within a week, पता है उनके अंदर क्या लगता है? अगर वो आप उन्हें ads का free में दे रहे हो, they will be like, मुझे तो 1 week में कोई result ही नहीं आया. This won't work for us. बल्कि ऐसा होता नहीं है. Same I goes with social media management. yeah, अगर मैंने उनके लिए 1 week काम किया, उनको कोई इतना रिजल्ट नहीं मिला, इट्स नॉट पॉसिबल 1 week में उन्हें कोई रिजल्ट मिले, राइट. और yeah, उनको ऐसा लगता है यार मेरा भी बहुत टाइम जा रहा है, मुझे भी इन्वॉल्व होना पड़ रहा है. नो, दिस इज समथिंग आई कांट डू दैट. बट यस, व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग अ लैंडिंग पेज हो गया, राइट, कॉपी राइटिंग पार्ट हो गया, तो वो आप प्रोवाइड कर सकते हो. इट्स अ वन टाइम थिंग एंड उसका yeah. This रिजल्ट is वहीं a मिल जाएगा. if you can get the testimonial in just 1 week by putting करेक्ट. some of your efforts, then go for that.
And I also had that good experience that I told you, but I also had some bad experience. I did the copywriting, I put so much efforts and the work really good, but she doesn't like it. And I'm like, what kind of person she is? So sometime you will get this kind of experience also. Just putting the efforts and do something. That's the most important. Yes, Sabah. So I just want to know if there is someone, okay, who want to start this digital marketing agency and want to hit these big numbers, 10K dollar per month or maybe 5K dollar per month, or maybe in India 1 lakhs per month, right? So what kind of advice you will give to them, and how much time that is going to take, right? Like what will you say, what's the So, best resource, how they can do fast? Yeah. yeah. So first of all, I just wanted to tell you, like, start as a freelancer, okay? And आपको जो भी skill master करनी है, okay? Choose it. Okay, it's not about अपने आप को find out करो आपको क्या अच्छा लग रहा है, या first of all just choose it what you want to do. I want to be a very great video editor. ठीक है, आपने choose कर लिया. Then एक ऐसा coach find out करो जो इस industry में best है. ठीक है, उसका जो भी प्रोग्राम है, परचेज दैट थिंग, स्टार्ट टेकिंग कोचिंग, उनसे सीखो जो ऑलरेडी एक्सपर्ट Yeah. है. एंड विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स आई टेल यू, आप उतने ही मास्टर बन जाओगे एंड यू कैन चार्ज द सेम अमाउंट ऑफ मनी ऑल्सो. So this is the simplest thing. This is Nowadays the it's very fastest easy. thing. Yeah. Yeah. I completely agree. I also took, 1K dollar coaching program. After that, I took 1K dollar coaching program again, other coaching program. And I think this is the secret of my success, not the success, I'm still learning. Okay. But the little things that I did till now. So that's the secret that I revealed today. Yeah. Yeah, So see, the digital coaching world part में तो only. Yeah. Coaching part only. That's the most, and you are very accountable. You are in the community. Everyone is supporting. You can ask questions. You can cry with your community. When it's the bad times, when you are struggling like anything, right? correct. And when you get the achievements, you can just celebrate in the community. So this is like a family. I enrolled in 2 coaching programs, and I had great connections. Because of that, and I learned so much. You can just model some people, model your coach, right? करेक्ट करेक्ट लाइक बिकॉज काफी लोगों को ना ये इशू आता है रोहन कि हमारे पास वी आर नॉट हैविंग द राइट एनवायरनमेंट, right? We can't talk about our business to anyone. Our friends will make fun of us. So go and find the right community. There you can discuss each and everything, and that Yeah, people would understand also because he or she is going through the same phase as we are yeah. going through. Okay. By the way, guys, you can also learn from Saba. She also does coaching, right? So Saba, Yeah, why but I you? only take limited people. Yeah. Okay, why you started this coaching, and what was the journey with the coaching? Okay, so majorly my coaching is for the females only. Okay, and yeah, that was Why something my females? that was something my dream. I always want females to be financially independent because I Okay, know what phase I have gone through, and I want them also to be, वो अपनी freedom के लिए fight कर सके, and they can stand and take a stand of themselves. Plus, they can do the things that they want to do. They don't have to okay, listen about the others. सो मेरा जो कोचिंग प्रोग्राम था वो फीमेल्स के लिए स्टार्ट हुआ था रिगार्डिंग द सोशल मीडिया मैनेजमेंट ओनली. So how they yeah, can become a social media manager and how they can make the good amount of money by sitting at your home, whether she is a housewife or whether she is already doing any professional or she is a college going student, but yeah, she don't want to be on her parents or on her husband brother anymore, right? Like, so इस perspective से मैंने वो coaching program start किया था. And yeah, that was only for the females. yes. I'm more of अगर a feminism kind of girl. Okay. You mean अगर मेरा कोई भाई सुन रहा है इस podcast को, if someone want to learn, so they can't learn from you, right? They can learn, but मतलब they can learn. ऐसा नहीं है मेरी coaching में मतलब males भी है, but 95% are the females only. Like I run the ads also and everything, but सब कुछ मेरा female oriented ही होता है. But yes, अगर उनमें से एक आधा male आ जाए तो I don't say no to them because Okay, I don't if you want to get stop the them for the learning. Yeah. okay, so भाई लोग, you can also learn from Saba.
So she's open for that. So yeah, thank you. Okay, so I just want to know more about that coaching part, like how it feels like to be a coach, right? And how you learned, how to be a coach, right? If someone wants to get into this coaching, if someone is doing something good, in their freelancing. Yeah. So, like first of all, I have started as an agency owner. Then I was like, okay, Sabah, let's get started with the coaching also, because you have also learned all these things from a coach, right? And there are a lot of people who want to learn the same thing. So you can be the right person. Of course, at the initial stage, आपके पास doubts होते हैं. You are a right person like for the coaching or not. मतलब तुम लोगों को पढ़ा सकते हो या उन्हें गाइड कर सकते हो, that's a different thing, and that's a huge responsibility also on your Okay. shoulder. तो जब मैंने स्टार्ट किया था, I was little bit confused, but I was like, no, Sabha, you were having this aim that you want to help females, right? तुझे अपना वो target hit करना है, तुझे females को help करना है. You want themselves to see, like you want to see them independent. So मैंने अपना coaching program बनाया of the same thing जो मैं खुद करती थी. Plus ये एक ऐसा चीज था like social media management कि ये कोई भी female कर सकती है. Plus they can do this work like from home also. राइट सो उनको कोई भी चीज स्टॉप नहीं कर सकती इफ दे आर नॉट हैविंग द परमिशन टू गो आउट आल्सो देन आल्सो दे कैन मेक मनी बाय सिटिंग एट देयर होम राइट Okay. सो दैट्स वाज माय मेन एम आई स्टार्टेड दिस थिंग एंड इट्स बीइंग अराउंड अ ईयर आई थिंक not Wow, around a year, awesome. but yeah, I was not that much consistent towards the coaching. Like people are having the queries if they are asking me about my product, about our coaching, then we are doing it on a side by side basis with our agency itself. How you feel when you get to know you changed someone's lives completely with your uh, coaching? like seriously, same goes with the agency and coaching also. Like it's a kind of responsibility if someone is trusting on you, right? चाहे वो Yeah. मेरे coaching program के लिए आ रहा हो, चाहे वो client मेरी service के लिए आ रहा हो, but they are trusting on me. That's a very huge responsibility on my head. People say this thing, oh, you are making a huge amount of money or this and that. Guys, वो responsibility भी होती है, right? Yeah, I know जब I कोई भी agree. client close होता है ना, मेरा partner बोलता है, business partner, oh, we have closed a new client. I'll be like, a new responsibility is coming, Sabha. So I'll try to do my 100%. So same goes with my coaching program also. But when I see the messages from them, like by making 20,000, 25,000, they are feeling so happy because उन्होंने कभी अपनी लाइफ में they haven't made the money, right? Yeah. उन्होंने वो चीज नहीं करी है. तो वो बहुत अच्छा फील होता है कि आप कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में वैल्यू एड ऑन कर पा रहे हो. एंड that was the main purpose. मैंने आज अपनी story भी डाली थी. Some people were asking me, like, why you keep on sharing your workout photo on a daily basis? I say there are a lot of people जिन्होंने मुझे इसके regarding message भी किया है. Like you remain so consistent. I also want to start my workout journey. And by seeing you, मैंने अपना workout करना start किया या मैंने अपनी journaling start किया है. So अगर मेरी कोई एक story से या मेरे कोई एक action से किसी एक की भी life में कोई impact होता है या कोई influence होता है towards the right direction, I think that is sufficient for us. Yes, I'm also motivated, by watching your story and to start my fitness things. And I'm going to start, after 2, 3 days. So I'm also Awesome. one of them, I would say. Like I So watch here's the your, example. yeah, I watch your story. I watch Isan Sharma, if you know that person. He also shared a lot of story about his fitness. Okay, so I just wanted to know, you started your fitness things, okay? So how that fitness changed your life and also your business? Okay, so I was the one who was like very much underconfident before like a few years back about my personality in terms of like you see a Saba who is so confident, have a glowing skin, this and that, fitting body, all these things. But ऐसा नहीं था when it comes to like 2.5 years back, right? The main thing is लोग क्या सोचते हैं कि या मैं जैसा हूं ना, start loving yourself. That's a different thing. Yeah. ठीक है, you have to start embracing yourself, you have to start take caring of self. I'm just giving an example, I'm not against anyone. If you are someone okay जिसको लगता है okay I'm more chubby and I need to be fit, right? So लोग excuse बनाते हैं, नहीं यार जैसी बॉडी है उसको वैसा प्यार करो और you don't have to work towards anything. जो खाना है खा यार, छोटी सी जिंदगी है, ठीक है, तेरा बाहर का खाने का मन है, do that thing. But that's not true. Right, if you Yeah. literally want to love yourself, you have to feel that thing and उसके towards आपको काम करना पड़ता है.
Yeah. So it's a different concept. Loving yourself or making excuses about the situation is a different thing. I read that Right. post, you know. हाँ, तो Self लोग love उसको today. मिक्सअप Yeah. एग्जैक्टली लोग उसको मिक्सअप कर देते हैं. एंड सेम गोज विथ मी. तो मेरा था, मैं बाहर का बहुत खाती थी एंड ऑल दीज थिंग्स आई यूज्ड टू डू. देन आई हैव स्टार्टेड मेकिंग, ओके सबा, यू हैव टू डू द वर्कआउट ऑन अ डेली बेसिस. बाहर का खाना है बट ऑन अ वीकली बेसिस यू हैव टू डू. मोस्ट ऑफ द स्टोरीज में आपको मेरे साउथ इंडियन फूड ही दिखेगा, एंड दैट वाज द मेन थिंग बिकॉज आई डोंट प्रेफर चाइनीज इन एवरीथिंग नाउ, राइट. Then okay, I have started taking care of my skin also on a daily basis. मैंने बहुत सारा पानी कंज्यूम करना स्टार्ट किया and everything, right. Then only, and उसने ना automatically मेरे अंदर बड़ा confidence build up किया. I was Yeah. never a very ऐसा person जो बहुत well dressed रहे. अभी आपको well dressed दिख रही हूँ but मैं रोजाना well dressed होती हूँ बहुत. This is something that makes me feel confident from inside. Whenever Yeah. I'm having a meeting, automatically मुझे confident feel होता है. Hmm. तो या वो छोटी छोटी चीजों ने ना मेरे अंदर लाइक बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म किया है. जब से मैंने खुद का वो टेक केयर करना स्टार्ट किया है, ऑटोमेटिकली मेरा बिजनेस लेवल भी, मेरा पर्सनालिटी लेवल भी, मेरा माइंडसेट भी, वो ऑटोमेटिकली लाइक अपग्रेड हुआ है. Yeah. सो आई थिंक एवरीवन शुड स्टार्ट टेकिंग ऑफ देयर like everyone should start taking care of themselves in terms of fitness also, in terms of food, in terms of lifestyle, everything. That's most important thing. Yeah. I'm also getting, you know, so much motivation to for my fitness journey. Yeah. And यार हम पैसा consistent. कमाने हैं, मतलब अपने लिए ही तो, Yeah. अगर अपने And ऊपर this ही नहीं खर्च also, करेंगे. this will also change your business completely. Correct. That's what I feel. And I think you Yeah. also felt the same, right? Yeah. You have more energy, more creativity, more work. So yeah, important. Okay. So like I'm loving this podcast, this flow, you know. I have so many things in my mind, but I will be asking you more things from your in the second podcast. And I'm just curious, you know, what was the struggle, how you did that, you know, that journey. 15K, $200 to $1,500 per client. So that's the most interesting thing I would love to know, and we will be doing second podcast. And now, Saba, I want to ask some difficult questions. Are you ready for that? Difficult. Okay. Okay. So, what's the biggest regret in your life? Lying to my parents. Why? Because still my parents are not aware about my agency. They are not aware about my office. They are not aware about anything about all these things. According to them, I'm going to my college on a daily basis. I'm doing my MBA, but that's not true. I'm lying to them right now about this thing. Yeah, I think that would be the best. Like that's what I am feeling. Okay, I don't know, but that would be the best thing, you know, when you will be making great things Yeah, and but when they will shock, you know. So that I will be the don't best know, but feeling. वो regret होता है क्योंकि कभी कभी, because see, when you are into a business journey ना, आपकी लाइफ में ना वो up and down चलते हैं, ठीक है. And at Yeah. that time you want someone to share about all these things. मेरा बहुत बार मन करता है कि मैं अपने पेरेंट्स के आगे रो लूँ, मॉम आज ऐसा हो गया बिजनेस में, या कभी कोई खुशी की बात है, मॉम चलो आज बाहर चलते हैं, आज ऐसा हो गया बिजनेस में. बट आई हैव टू स्टॉप माई इमोशंस, लाइक आई हैव टू कंट्रोल माई इमोशंस. Like when I'm feeling sad, I have to cry at my room only or in the washroom, or when I'm feeling happy, then also like नहीं ठीक है मम्मा, स्कूल कॉलेज में बहुत अच्छा कोई प्रोजेक्ट हुआ या टीचर ने कुछ अप्रिशिएट किया, आई हैव टू लाई दैम. बट मेरा उनके साथ वो सारे इमोशन शेयर करने का मन करता है. सो आई फील हैवी, लाइक बहुत हैवी फील होता है मुझे कई बार उस सिचुएशन को लेकर. बट लाइक आई हैव ऑल्सो टेकन सम गोल कि मुझे पहले ये करना है, एंड उसके बाद बिकॉज आई एम नॉट अवेयर कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, मुझे अभी तक आइडिया नहीं है कि वो शॉक होंगे या वो मुझे डांटेंगे या क्या रिएक्शन होगा, आई डोंट नो. सो आई एम हैविंग दैट फियर, एंड मैं ऑफ कोर्स आफ्टर अ ईयर मुझे वो डिस्क्लोज करना है उनके सामने. बट आई डोंट, मैं कभी ये डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगी शायद कि मैं कॉलेज नहीं जाती थी और ये था, मतलब वो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी. तो या आई I डोंट नो hope कैसे होगा. they are not going to watch this podcast. I think. No, they are not on social media. Yeah. Okay, so yeah, that would be good, you know. Yeah. Okay. So one more thing. I think many people already know about good things about Sabah, you know.
you are listening this podcast, maybe you are following Saba on social media. So he sees sharing some good things on the story on the social media. So what's the bad thing about Saba? What's the dark side of Saba? That's what Okay. the audience Uh, want to know. Yeah, the dark okay. side about Saba. Yeah. So I'm a person जो बहुत जल्दी angry mode में आ जाता है. ठीक है. Like I always want to be a leader, and जो मेरी जर्नी में मेरे को काफी tough situation में लाके जिसने problems में भी मेरे को लाए हैं. For example, if I'm working with a client, I'm the person, okay, who wants to give the reviews, feedbacks, ideas about them, ठीक है, about their business. But कभी कभार जो client बहुत bossy हो जाता है, मैं नहीं ले पाती. मेरे अंदर खुद से ही ना थोड़ा सा मेरे अंदर वो बॉसीनेस है, एंड दिस इज समथिंग आई एम ट्राइंग टू वर्क अपॉन. ठीक है. तो उस चीज को मैं राइट वे में नहीं ले पाती, एंड वो तो ओके, आई एम हैविंग अ बिजनेस पार्टनर जो उस सिचुएशन को संभाल लेता है. I keep my phone aside. I don't reply to that client. I'll say to Vishish only, okay, just take care of the conversation, because अगर मैंने reply किया, so that can be harsh also, right? Because होता है जब मैं किसी के लिए काम करती हूँ ना, चाहे मैं बिजनेस करूँ या मैं किसी के साथ इन्वॉल्व हूँ, I give my 100%. But if that person don't understand this thing और वो उस वे में उसे नहीं लेता, तो मुझे फिर आ जाता है, like I lose my Yeah. temper at that situation. So yeah, मेरे पास वो short tempered वाली चीज है, and I'm trying to work on that thing. Yeah, क्योंकि anger वाली चीज नहीं होनी चाहिए. वो आपको बहुत सारी चीज आपकी लाइफ की खराब करती है. It's not about your business but other areas also. So I'm working on that. Okay. When Yeah. it's done, share, how you worked on that. Yeah, I'm You, reading works on a daily basis. मैंने एक इमोशनल वेलनेस कोच के साथ भी मैं कोचिंग ले रही हूँ. I told you ना, जो भी प्रॉब्लम होता है, started working on that. I'm making money, मैं mm, उसको साइड पे साइड इन्वेस्ट भी करती it's रहती हूँ. the I don't best to prefer hire a that. coach and improve fast. Exactly. This is the So best I'm thing I working on also do. that. Yeah. Yeah. Okay. So you just reminded me one of my client. So that same nature, that bossy nature and not behaving in a good way, right? So yeah, it's important. When you are working, so it's important to tell them how exactly you are working and Correct. how much effort it's taking from your side. It's not like you just wrote the content. You did so much research, then that is the copywriting. So Correct. yeah, it's important. Okay, Sabah. So that was really great experience with you. And I think personally, I learned so much from this podcast. And you are an inspiration. That's what I would say. Thank you. And Yeah. I just wanted to give a small message to all the females, especially. Like, please start working on yourself in terms of it's very much important nowadays to be financially independent. Okay. If you really might be अभी आपके पास सब कुछ होगा. You're having money, everything, and you are like in a very good family, आप born हुए हो. You're having everything, a very good family, brother, sister. But you don't know about your future, guys. You don't have any idea. आपके हस्बैंड Mm. कैसे होंगे या आगे क्या आपकी लाइफ में होने वाला है, आपको कोई सिचुएशन भी नहीं पता है. इट्स नॉट अबाउट द हस्बैंड, इट्स अबाउट डिफरेंट थिंग आल्सो. यू नेवर नो आपकी लाइफ में क्या चीज, कितने बड़े बड़े ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, राइट? सो प्लीज बी इंडिपेंडेंट. इफ यू आर लाइक कैपेबल इनफ ऑफ पेइंग मनी फॉर योरसेल्फ, सो जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में, यू कैन ओवरकम दैट. सो प्लीज कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. स्टॉप थिंकिंग लोग क्या कहेंगे. ठीक है. एंड अभी आप होंगे वो हैप्पी सिनेरियो में, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. दैट्स अ स्मॉल मैसेज आई जस्ट वांट टू शेयर. आई होप ये मैसेज काफी लोगों के पास पहुंच सके थ्रू Yes, रोहन yes, sir. पॉडकास्ट. Yes, yes, yes. You should not wait for that time, कि आपके दिल पे कोई चीज लगे, then you एग्जैक्टली. start, right? क्योंकि कभी कभी बहुत लेट हो जाती है कुछ चीजें. करेक्ट. हाँ, सारी चीजें टाइम पे अच्छे से स्टार्ट हो तो अच्छा है. परफेक्ट. Yeah. Okay, so Sabah, that was a really great experience. I just want to know how was your experience? Any feedback for me or anything? First of all, thank you so much again for calling me over here. It was literally a lovely experience for me, sharing my all the things. क्योंकि मैं नहीं करती हूँ कहीं पे शेयर, मुझे आज एक मौका मिला अपनी सारी बातें शेयर करने का. So yeah, and the feedback for you is this only, like,
You are a great smiling person, and I'm just loving this podcast. So yeah, keep Yeah. doing this thing with others and keep inspiring more people through your podcast. Yeah, I can do, 2 hours podcast, 3 hour podcast. The problem is people don't watch it. Guys, start watching long content. Forget about reels and shorts. Yeah. Okay. So it was great experience with you, and I'm excited for our second podcast. And yeah, thank you. Thank you so much for coming. Thank you so much, Rohan.